आज इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर इसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले के पार्ट में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। तो आज हम लोग नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए हुए, मीन्स बिना x की वैल्यू, वेरिएबल x की वैल्यू निकाले हुए, इसके नेचर क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वेदर रूट्स आर रियल और नॉट, इफ रूट्स आर रियल देन वेदर दे आर डिस्टिंक्ट और सेम, ये जानेंगे। और पूरा फोकस हमारा रहेगा एक एक्सप्रेशन b² - 4ac में, यानी b² - 4ac की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का के रूट्स का नेचर। इसके लिए हम तीन इक्वेशन को हमने लिया है, x² + 5x + 6 = 0। दूसरी इक्वेशन ली है x² + 4x + 4 = 0। और तीसरी इक्वेशन ली है x² + x + 1 = 0। इन तीनों इक्वेशंस को फॉर्मूले मेथड से हमने सॉल्व किया है और b² - 4ac पे स्पेशली एम्फेसाइज किया है कि इसकी वैल्यू क्या है। पहली इक्वेशन में b² - 4ac 1 है और सॉल्व करके हमें आंसर आ रहा है, x की वैल्यू मिल रही है -2 एंड -3। ये दोनों नंबर्स रियल नंबर हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं, दोनों अनइक्वल नंबर्स हैं। तो इस केस में हम कहेंगे कि बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरी इक्वेशन है x² + 4x + 4 = 0। इस केस में b² - 4ac की वैल्यू 0 मिली है और सॉल्व करने पे x के रूट्स या x की वैल्यूज मिली है -2 और -2। तो वी कैन से दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। In third equation, x² + x + 1 = 0, value of b² - 4ac is -3, which is negative, and we can't find square root of negative number. Therefore, we can't find value of x, and hence we say that roots of this equation are not real, that is, roots are imaginary. b² - 4ac, in first equation, value of b² - 4ac is positive, non-zero number. Therefore, square root of b² - 4ac is a non-negative real number when this non-negative real number is added or subtracted from minus b, that is in this case -5, we get two different numbers and so we get two different roots. In second case, b² - 4ac = 0. Square root of 0 is also 0. Therefore, when root b² - 4ac, that is this 0, is added or subtracted to -b, we get same answer, and hence we get two equal roots. In third case, b² - 4ac is -3, that is b² - 4ac is negative, and square root of negative number is not defined. Therefore, in this case, we say that if d is less than 0, then roots are not real. Hence, we can say that nature of roots of
quadratic equation depends upon the value of b square minus 4ac. Hence, without finding value of x roots, we can find nature of roots of quadratic equation by finding value of b square minus 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac के इसी स्पेशल परफॉर्मेंस की वजह से इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय डी एंड इक्वल टू बी, दैट इज डी इक्वल टू बी स्क्वायर minus 4ac. The whole conclusion of this study is, if d is greater than 0, then roots are real and distinct, vice versa. If roots of an equation, that quadratic equation, is real and distinct, then d should be greater than 0. Second case, if d equal to 0, then roots are real and equal. Vice versa, if a quadratic equation has real and equal roots, then d should be 0. Third case, if d is less than 0, then roots are not real. Vice versa, we can say that if roots of a quadratic equation is not real, then d should be less than 0. Now we consider whether ax square plus bx plus c can be factorized or not. If ax square plus bx can be factorized, then whether it is perfect square or product of two different linear factors. It also depends upon, that is, factorization of ax square plus bx plus c also depends upon value of d, that is b square minus 4ac. That is, factorization of ax square plus bx plus c depends whether the roots of quadratic equation are real or not. If roots are real, then whether they are equal or distinct. If roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0 are, first case, real and distinct, then ax square plus bx plus c can be factorized into two linear factors. Means, if roots of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are alpha and beta, then polynomial ax square plus bx plus c can be factorized as a into x minus alpha into x minus beta. Second case, if roots are equal, then polynomial ax square plus bx plus c will be perfect square. If roots are imaginary, that is not real, then ax square plus bx plus c can't be, that is expression or polynomial ax square plus bx plus c can't be factorized. Now we are taking some problems
of nature of roots. Without solving equation 4x square minus 12x plus 9 equal to 0, find the nature of roots. Also find whether the expression 4x square minus 12x plus 9 can be factorized or not. Note, equation is 4x square minus 12x plus 9 and expression is quadratic polynomial 4x square minus 12x plus 9, same expression. Since this expression is equal to 0, it is a statement of equality, therefore this is called quadratic equation, and this expression do not contain equality statement, therefore this expression is called quadratic polynomial. In this case, we have a equal to 4, b equal to minus 12 and c equal to 9. Therefore d equal to b square minus 4ac, that is equal to b square minus 12 square minus 4 into a 4 into c 9. We get 144 minus 144, that is equal to 0. So since d equal to 0, therefore we can say that roots are real and equal. Now second part, whether this expression 4x square minus 12x plus 9 can be factorized or not. Here we can say that since d equal to 0, therefore expression 4x square minus 12x plus 9 is perfect square. This is our complete solution. Here d equal to 0, therefore we can say that since d is 0, therefore roots are real and equal. Also we can say that since d equal to 0, therefore polynomial 4x square minus 12x plus 9 is perfect square. हम जानते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 को अगर हम फैक्टराइज करें, जैसे पुराने क्लासेस में हम लोग ने किया है, तो दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 3 होल स्क्वायर. तो फैक्टर भले हमने किए या नहीं किए, लेकिन सिर्फ d की वैल्यू निकाल करके हमने जान लिया कि इस ये एक्सप्रेशन को अगर फैक्टर करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर minus 4x plus 3 equal to 0. Find the nature of root of quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 equal to 0. And also find whether 2x square minus 4x plus 3 can be factorized or not. In this equation, we have a equal to 2, b equal to minus 4 and c equal to 3. Now value of d equal to b square minus 4ac, that is equal to minus 4 square minus 4 into a2 into c3, that is equal to 16 minus 24 equal to minus 8. Since d is less than 0, therefore we can say that
roots are not real. Roots are not real, that is, roots are imaginary. And second part of this question, whether this expression 2x square minus 4x plus 3 can be factorized or not. Since d is less than 0, therefore we can say that 2x square minus 4x plus 3 can't be factorized. Now, third question. For equation x square plus 2x minus 5 by 2 equal to 0, we have to find discriminant of this equation. We have to find nature of roots. If roots are real, then also find them. Last part is find factor of x square plus 2x minus 5 by 2. Equation is x square plus 2x minus 5 by 2. Note here, d a equal to 1, b equal to 2 plus 2, c equal to minus 5 by 2. Now d equal to b square minus 4ac, that is 2 square minus 4 into a1 into c माइनस 5 by 2. सी नेगेटिव है और नेगेटिव नंबर जब भी सब्स्टिट्यूट करने होते हैं तो प्रॉपर ब्रैकेट का यूज करिएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन में दिक्कत होगी. दैट इज इक्वल टू 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 14. फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है क्योंकि उसमें d की वैल्यू पूछी गई थी. फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, तो वी कैन से दैट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 14. सेकंड पार्ट है फाइंड द नेचर ऑफ रूट. हियर d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर वी कैन से दैट रूट्स आर रियल and distinct. तो सेकंड पार्ट भी हो गया है. थर्ड पार्ट है इफ रूट्स आर रियल देन फाइंड देम. तो फॉर्मूला यूज करते हैं रूट्स निकालने के लिए. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम d कहते हैं, तो इसलिए हमने फॉर्मूले को चेंज कर दिया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. फॉर्मूला वही है, बस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे d रखा गया है क्योंकि ऑलरेडी d हम निकाल चुके हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं. तो दैट इज माइनस बी हमारे पास है 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट डी 14 है अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, तो ए इक्वल टू 1 है. तो देयरफॉर रूट्स आर माइनस 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 2. यही हमारा आंसर है. नेक्स्ट पार्ट है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर
plus 2x minus 5 by 2. Now x square plus 2x minus 5 by 2 can be factorized as a into x minus first root into x minus second root. We have two different roots. Take alpha equal to first root minus 2 plus root 14 upon 2 and second root beta equal to minus 2 minus root 14 whole upon 2. Putting these value of alpha, beta and a, we have factors as a1 into x minus alpha means minus 2 plus root 14 upon 2 into x minus beta, that is x minus 2 minus root 14 upon 2. Therefore, our factors are x plus 2 plus root 14 upon 2 and x plus 2 minus root 14 upon 2. After simplification, taking LCM, we have factors as 1 upon 4, 2x plus 2 plus root 14 into 2x plus 2 minus root 14. So in this case we have 4 questions. First we have to find value of d, second find the nature of root, and find the factors of this expression. Now take fourth question. For what value of k equation 2x square minus 5x plus k equal to 0 has equal roots? हमको k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। या ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज परफेक्ट स्क्वायर। दोनों के लिए हमें इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को लेना है कि d इज 0। In this equation, a equal to 2, b equal to minus 5 and c equal to k. Since we have given roots are equal, it implies d should be 0, that is b square minus 4ac should be 0, that is minus 5 square minus 4 into a into c, a means 2 into c, k equal to 0, that is 25 minus 8k equal to 0. After simplification we get k equal to 25 by 8. Next question. For what value of equation px square plus 3x plus 2 equal to 0 has real roots? यानी p की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए रूट्स रियल हों। हम इसके लिए स्टेटमेंट यूज करेंगे, roots are real, it means
d is greater than or equal to 0. Now in this equation, a equal to b, b equal to coefficient of x 3 and c equal to constant term 2. Now putting these values in b square minus 4ac, we have 3 square minus 4 into a means p into c, 2 should be greater than or equal to 0. b square means 3 square minus 4ac, 4 into p into c2 is greater than or equal to 0. That is 9 minus 8p is greater than or equal to 0. By transformation of term plus 9, left hand side we have minus 8p and जब प्लस 9 राइट में जाएगा तो माइनस 9 होगा, तो वी हैव माइनस 8p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 9. अब इस इनइक्वालिटी को हम माइनस 8 से डिवाइड कर रहे हैं फॉर मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ p यूनिटी. नेगेटिव नंबर से जब भी इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हैं तो इनइक्वेशन का सिंबल बदल जाता है, मीन्स ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में वी हैव p का रिलेशन होगा माइनस 9 डिवाइडेड बाई माइनस 8, लेकिन इनइक्वेशन का सिंबल बदल जाएगा. दैट इज p इज लेस देन और इक्वल टू 9/8. दिस इज आवर आंसर. तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर जाना और उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने नॉलेज ली. अब इस वीडियो के कंटिन्यूएशन में जो इसका थर्ड पार्ट होगा, उस थर्ड पार्ट में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं, उन वर्ड्स प्रॉब्लम से इक्वेशन को फॉर्म कर कैसे किया जाए, कैसे इसको आसानी से इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाए, उसको हम पढ़ेंगे. थैंक यू.